अद्य वयम् अन्नं भट्टस्य ग्रन्थस्य तर्कसङ्ग्रहस्य विषये पठिष्यामः। तत्रोक्तं मङ्गलाचरणे निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। तत्र शिवस्य आराधना कृता मङ्गलाचरणे। पदार्थानां संख्या विषये पूर्वमेव पाठितम् अस्माभिः यत् द्रव्यगुणकर्म सामान्य विषये समवाय अभावा सप्त पदार्था। तत्र द्रव्यस्य अपि लक्षणं पूर्वमेव पाठितं। द्रव्याणि पृथिव्यां तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसि इन्नावेव। अधुना द्वितीयं पदार्थं वर्तते गुण। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखे च द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः। अधुना प्रथमः गुणो वर्तते रूपं। नपुंसकत्वे रूपशब्दस्य प्रयोगो भवति। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम्। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेदात् सप्तविधं। पृथ्वी जल तेजो वृत्तिः। तत्र पृथिव्यां सप्तविधं रूपं भवति। अभास्वर शुक्लं जले भास्वर शुक्लं तेजसि। अर्थात जले अभास्वर शुक्लं वर्तते विदाउट ब्राइटनेस, तथा तेजसि तु भास्वर शुक्लं वर्तते विद ब्राइटनेस। द्वितीयो गुणो वर्तते रस। रसस्य लक्षणमपि अभिहितम् अन्नं भट्टेन। रसनाग्राह्यो गुणो रसः। रसना इति जिह्वाया रसनाग्राह्यो गुणो रसः। सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। मधुर प्रकार को रसः, अम्ल प्रकार को रसः, लवण प्रकार को रसः, कटु प्रकार को अपि रसः, कषाय प्रकार को अपि रसः, तिक्त प्रकार को अपि रसः इति षड् प्रकारकः रसः वर्तते। पृथ्वी जल वृत्तिः। अर्थात पृथिव्यामपि रसो वर्तते जलेपि रसो वर्तते। पृथिव्यां षड्विधः रसः। पृथिव्यां तो षड् प्रकार को रसो वर्तते। जले मधुर एव। जले तो मात्रं मधुरम एव वर्तते। अर्थात मधुर प्रकारकः रसः एव वर्तते जले। तृतीयः गुणः वर्तते गन्धः। घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः। स च द्विविधः सुरभिः असुरभिश्च पृथ्वी मात्रवृत्तिः। अर्थात घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः। नासिका घ्राणम् इति नासिका। नासिकया गुणस्य ग्रहणो भवति। अतएव घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः इत्युक्तम्। गंध द्विविध प्रकार को वर्तते गन्धः। गन्धः द्विविधो प्रकार को वर्तते। यत् सुरभिः सुगन्धित गन्धः असुरभिश्च असुगन्धित गन्धश्च। कुत्र भवति गन्धः इति विषये उक्तं तर्कसङ्ग्रहे यत् पृथ्वी मात्रवृत्तिः। अर्थात पृथिव्यामेव वर्तते गन्धः। उक्तमपि पृथ्वी लक्षणे तत्र गन्धवती पृथ्वी। अर्थात गन्धो अस्याम् अस्ति इति विग्रहे मतुङ्गी प्रत्यये गन्धवती। तत्र गन्धवती पृथ्वी लक्षणे उक्तं। सा द्विविधा नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम् इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषय मृत्पाषाणादि तत्रोक्तम् अन्नं भट्टेन पृथ्वी लक्षणे।
चतुर्थः गुणः वर्तते स्पर्शः। अधुना वयं षट् गुणपर्यन्तम् अर्थात संख्यापर्यन्तम् अध्ययनं करिष्यामः। चतुर्थः गुणः स्पर्शः। स्पर्शस्य लक्षणम् उक्तं यत् त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणो स्पर्शः। स च त्रिविधः शीत उष्ण अनुष्णा शीतभेदात्। शीत प्रकारकः स्पर्शो वर्तते, उष्ण प्रकारकोऽपि स्पर्शो वर्तते, अनुष्णा शीत प्रकारकोऽपि स्पर्शो वर्तते। पृथ्वी अप तेजो वृत्तिः अर्थात पृथिव्यामपि स्पर्शो वर्तते, अप अर्थात जलेपि स्पर्शो वर्तते, वायोरपि स्पर्शो वर्तते तथा तेजसि अग्नौ अपि स्पर्शो वर्तते। अतएव उक्तं पृथ्वी अप तेजो वायुर्वृत्तिः। तत्र शीतो जले जले शीतत्व प्रकारकं स्पर्शं वर्तते। यतोहि जलस्य लक्षणे अपि उक्तं शीत स्पर्शवत्य आपाः। अधुना उष्णस्तेजसि अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायोः। अधुना पाकजत्वस्य अपाकजत्वस्य च व्याख्या अन्नं भट्टेन कृता वर्तते। रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च। रूपादि इत्यस्य अभिप्रायो अस्ति रूप रस गंध स्पर्श। अतएव रूपादिचतुष्टयं पाकजं पृथिव्यां नित्यम् अनित्यं च। अन्यत्र अपाकजं। पुनः श्रूयतां रूपादिचतुष्टयं पाकजं पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च। अन्यत्र अपाकजं नित्यम् अनित्यं च। नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम्। अधुना संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या लक्षणमुक्तम् एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्यवृत्ति। संख्या नवद्रव्येषु वर्तते विद्यते। एकत्वादि परार्धपर्यन्ता संख्या वर्तते। एकत्वं नित्यम् अनित्यं च। एकत्वं नित्यम् अपि भवति अनित्यम् अपि भवति। नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम्। द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्यमेव। द्वित्वादि संख्या तो अनित्यमेव वर्तते सर्वत्र प्रायः। संख्या विषये संस्कृत भाषायामपि उक्तं श्लोकमाध्यमेन एकं दश शतं चैव सहस्रम् अयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दश वृद्ध्या यथाक्रमम्। प्रायः तर्क संग्रहे पदार्थानां संख्या सप्त गणना कृता। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। किंतु मूल न्याय दर्शने अर्थात तर्क भाषायां न्याय सिद्धांत मुक्तावल्यां पदार्थानां संख्या षोडश कृता वर्तते। षोडश प्रकार का पदार्थः तर्क भाषायाम् अपि उक्तम्। किंतु तत्र उक्तं यत् प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयवतर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलत जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान्श्रेयसाधिगमः इति न्यायसूत्रे उक्तम्। इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम्। अस्य व्याख्यायाम् उक्तम् अस्यार्थः प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानान् मोक्ष प्राप्तिर्भवति। अत्र उक्तं षोडश पदार्थानां। वयं
संख्यातः अग्रे अग्रे च ये गुणाः सन्ति तेषां विषये आगामी दिवसे पठिष्यामः। धन्यवादः।